बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर से होंगे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फेसबुक मार्केटिंग, और फेसबुक मार्केटिंग में हमने देख लिया कि फेसबुक के पेज को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, फेसबुक पे एसईओ कैसे करते हैं, कीवर्ड का रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, फिर आसम पेजेस कौन से हैं, फिर फेसबुक फॉर बिजनेस हमने पढ़ा, फिर हमने फेसबुक एड्स की कुछ बेसिक्स देखें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द कंप्लीट फेसबुक एड कॉपी एंड क्रिएटिव गाइड। सो इस लेक्चर में मैं आपको तमाम मुकम्मल फेसबुक एड कॉपी के बारे में गाइड करूंगा, और क्रिएटिव गाइड क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें मार्केटिंग की, सो कीप योर एड सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रैब द यूजर अटेंशन विद योर विजुअल, if it's image or video. Let customers know your value proposition and why it is relevant to them. So tell your customer what you want from them with a clear call to action message. So when possible, include your brand name or logo in your ad creative or ad copy to build your brand awareness. So most of the time you look at the Netflix ads on YouTube and Facebook and many other partner sites of Facebook and Google. So you see a Netflix ad. That ad, for me, that ad is a perfect example of a good creative. So that's why I have quoted over here: a proper call to action, a proper visual, a proper value proposition, and a very audience and very relevant to the product as well. So people are not, remember, people are not going to Facebook, Instagram to buy things. They are going for one purpose. They are going to connect with their family and with their friends. So जब भी आपने ad create करना है, you have to start creating your ads like you are communicating with friends. So आपने as ad लेके नहीं चलना। आप इसलिए मैं आगे आपको 3-4 टेक्निक्स बताऊंगा कि इसको किस तरह से ad लेके नहीं चलना। So start treating your ad like you are communicating with friends. My highest Facebook ad जो return on spend है, that is equal to, first I provide value, second उसी ad में I provide relationship, third I promote sell, only 10% of the time. So Facebook पे you have to provide value, build relationship, sell only for 10% of the time. ये तो हमने देख लिया कि Facebook किस तरह से सेलिंग करते हैं ऐड के साथ, और किस तरह से एक हायर आरओएस जनरेट हो सकता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं द 4 एलिमेंट्स ऑफ परफेक्ट फेसबुक एड। वो क्या एलिमेंट्स हैं, उनको वन बाय वन मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ। द फर्स्ट वन इज विजुअल, द रेलेवेंस, द वैल्यू प्रोपोजिशन एंड कॉल टू एक्शन। विजुअल मीन the video and image, and the video of the image of the ad should be visually appealing and professional looking. Relevance, is the ad relevant to the target market? Do they care about your offering? Okay. So value proposition, are you offering enough value for the potential customers to take action? Are you asking for what you want with strong CTA? Try to focus on one call to action per ad. So a single goal, and not to confuse your potential customer. So these are the 4 elements of a perfect Facebook ad. So you have to take care of visuals, the relevance of your ad, and the value proposition that you are giving to customers, and call to action that you want your customers to take on after seeing your ad. एग्जाम्पल अगर मैं कोट करूं कैरोसेल और मल्टी प्रोडक्ट ऐड की, तो यहाँ पे मैं विजुअल अगर देखूं तो अल्टरनेटिंग कलर्स स्लैश प्रोडक्ट्स एंड क्लीन क्रिस्प मैक्रो मर्चेंडाइज इमेज इन ईच कैरोसेल ऐड। अगर आप सारे इसको नीचे जाके देखें, एटीएस वैसे आप वैसे भी देख सकते हैं इसके कैरोसेल ऐड। इट्स वेरी रेलेवेंट, targeted brides, so guaranteed high clicks here as this is a super relevant targeting recently engaged people. So value proposition, every bride needs bridesmaids gift. So plus some of the slides offer XX percentage off with a coupon code. Call to action is the shop now call to action, बिल्कुल इसी के साथ
and sign up CTA button work great for my ads as they add a sense of urgency for all of them. So अगर मैं ETSI की ये ऐड देखूं तो इसमें मुझे विजुअल भी बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है, इसकी रेलेवेंसी भी है, इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन भी बड़ी जबरदस्त है कि उसके बाद CTA जो है कॉल टू एक्शन भी जबरदस्त है। एक और रिटारगेटिंग ऐड की तरफ जाते हैं। इसमें विजुअल देखें, जबरदस्त किस्म का विजुअल, हाई डेफिनेशन फोटो ऑफ द प्रॉपर्टी आई लुक्ड एट फॉर बुकिंग ऑन Airbnb. Relevant. I actually searched this listing. They got right to the point in the text and asked Airbnb we think would like in Playa del Carmen. Oh yes, I would. Yeah. So value proposition at discounted price as a text overlay right on the photo. $260. Call to action, that is book now. At this lower price, I better buy it now. अगर हम बूस्टेड पोस्ट ऐड की बात करें, विजुअल, रेलिवेंट एंड वैल्यू प्रोपोजिशन इसमें भी आपको नजर आ रही है बूस्टेड ऐड। अब हम जानते हैं कि फेसबुक ऐड कॉपी क्या होता है। तो फेसबुक ऐड कॉपी का मतलब, जब भी ऐड कॉपी कहे इसका मतलब है कि आपके ऐड में जो टेक्स्ट आएगा, आपके ऐड में जो अंग्रेजी आएगी, सो योर ऐड कॉपी शुड फोकस ऑन द आउटकम योर बायर विल ऑब्टेन विद योर प्रोडक्ट और सर्विस। व्हाइल स्टेटिंग your product or service feature is important, your main focus should be on harnessing the powerful sales tactics of portraying the outcome and benefits of your product and services that they are providing to the customer. So, दो पॉइंट, एक आपकी एड कॉपी आउटकम पे होनी चाहिए, दूसरा उसके फीचर्स पे होनी चाहिए, और सेल्स टैक्टिक के साथ आपने अपने उसके आउटकम्स भी, जो प्रोडक्ट और सर्विस के फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं, वो भी आपने उसके जरिए डिलीवर करना है। अब एड कॉपी शुड फोकस ऑन द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स। फर्स्ट इज आउटकम, सेकंड इज क्रेडिबिलिटी, थर्ड इज फीचर्स एंड फोर्थ इज रेलेवेंस। आउटकम प्ले ऑन योर कस्टमर्स इमोशंस। Brands who pair outcomes with human emotions will see very successful ads. And credibility, this can be via social cloud. जब मैं social cloud कहता हूँ, इसका मतलब social media follower, टेस्टिमोनियल वीडियोस, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, टोटल कस्टमर सेल्स आउटकम्स, सो ये सारी चीजें। फीचर्स, व्हाट मेक योर प्रोडक्ट डिफरेंट और बेटर विद दैट विल अट्रैक्ट योर टारगेट मार्केट। स्टेट द फैक्ट्स, स्टेट द बेनिफिट्स, कोट द सेल प्राइस, एंड यू कैन सेव ऑन वेस्टेड क्लिक्स बाय स्टेटिंग द प्राइस अपफ्रंट। एंड द फोर्थ वन इज रेलेवेंस. Try and make sure your ad is relevant to your target audience. For example, I will state a common problem, picking up a dog poop. My target market interest is go to dogs. Has that my product, hands-free scooper, is a solution to it. So speak to who you are targeting. Personalization always wins. So dog owners love this. No poo touch scooper. So notice how many problems, solutions ad copy example uses. अब हम आते हैं ad copy की best practice तरफ. After running multiple ads and thousands of ads for my clients over the years, we have discovered the following ad copy guideline work best. और ये Facebook के आप अगर copy guideline में जाएं तो वहां से भी आपको ये मिल जाएगी. Less than 20% should be the text. Pique curiosity, sell the outcome and include at least one emoji. My favorite for list is emojipedia.org/check mark button. उसके बाद add headline, less than 6 words, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए. Hook the user and make them want to click. Simple and straightforward thing in this case will work better. So the best practice is ad text should be the 20 words only, with that should pique curiosity and that should sell the outcomes and include at least one emoji from this platform. And headline, the headline of the ad should be less than 6 words, so that it can grab the attention of the customer and customer keep hooked with the ad, and customer should click the ad. So again, मैं कहूँगा simple and straightforward work best in this case. Now, Facebook ad का भी best practices. Test in bulk. You can test multiple variables at once in your Facebook ad campaign via the dynamic creative feature. Dynamic creative आप toggle करेंगे
And then ad set level पे when creating your campaign, rather than assuming the first ad copy that pops into your head will work was great, test as many variations as possible. On the ad level, while creating a new campaign, you can choose to add another option for each ad copy field. So there is a no perfect ad copy formula. Instead, you can test to see what works best and what works worst with every varying target market. So Facebook की जो copy testing है, you have to follow that as well. Now, track everything you test. While Facebook Ad Manager is great for looking at past ad campaigns, but you should also create an Excel document to track every headline, every ad copy, every ad creative, and every click and engagement event. So everything that results in leads, sales, and customers, you should track that. So this document will start to become a real estate and a real asset that will help you shape future ad copy and ad creative, because you will be able to see which ad variables equal results. So you can also use this document to track what other companies are using for their Facebook ads. So you will also learn how to look at other brands on Facebook and Instagram, and later in this lecture, the ultimate ad hack section. You will learn a lot from that as well. So आपने मुकम्मल तौर पर Facebook एड मैनेजर, जाहिर सी बात है ये काम सारे कर रहा होता है, बट आपने अपने एंड पे भी कि कौन सी कैंपेन, किस कैंपेन की डेट, उसकी हेडलाइन, उसकी एड कॉपी क्या थी, कौन सा एड क्रिएटिव, उसमें क्लिक्स किस तरह थे, कॉस्ट पर क्लिक कितनी है, कॉस्ट पर कन्वर्जन और परचेज कितनी है, ये आपने एक लिस्ट आपने प्रिपेयर करनी है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन सी फेसबुक कॉपी बेस्ट परफॉर्म कर रही है जब आपने उसको टेस्टिंग के फेज से गुजारा। अब ये एक लिंक है जहां से आप पॉलिसीज देख सकते हैं कि फेसबुक की एड्स की क्या पॉलिसी है। सो अगर बिगेस्ट इशू आई हैड फ्रॉम स्टूडेंट इन देयर एड gets rejected, before ever creating a Facebook ad, you should always read Facebook's advertising policies. The most common reason for rejected ad is misleading claims. ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ देंगे, वो कर देंगे, नहीं. So ads must not contain unrealistic results or false claims. Never make a specific claim like get rich, make money, or lose itna number of pounds. No, rather keep your ad copy focused on hooking the user's attention, piquing their curiosity, generating their curiosity, and selling the outcome. For example, you can say, are you interested in the best way to rapidly and safely transform your body? ये चीज. So अगर आपको हेडलाइन लिखने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, सो हेडलाइन लिखने के लिए आप ये टूल भी यूज कर सकते हैं, coschedule.com/headline analyzer. अब अगर मैं बात करूं फेसबुक एड क्रिएटिव्स की, तो फेसबुक एड क्रिएटिव्स में the number one rule for your Facebook ad creatives is to test, again test, and then again test. Like ad copy, there is no perfect recipe for great ad creatives. Although सारे प्लेटफॉर्म ने, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, तमाम ने अपने जो क्रिएटिव्स की गाइडलाइंस दी हुई हैं, लेकिन उन गाइडलाइंस को भी अगर मुकम्मल तौर पे फॉलो किया जाए, सो देयर इज नो परफेक्ट रेसिपी फॉर ग्रेट एड क्रिएटिव्स. You can assume all day what you think will perform best with your audience, but until you test the image or video, you won't know which one gets more clicks and conversion. So you can test multiple images or videos in your ad by toggling on the dynamic creative and at the ad set level and when creating a new campaign. So आप ad set level पे आप new ad set पे आपने क्लिक किया और फिर आप डायनामिक क्रिएटिव पे चले गए और उसको ऑन किया. फिर look at the top brands and competitor for inspiration. एक चीज मैंने बहुत सारे जब स्टार्टअप्स होते हैं या बहुत सारे बिजनेस होते हैं, they don't use high resolution image. Try to use very high resolution image as much as you can. So avoid using stock photos. User prefer authentic images and videos. Even if you are just using your cell phone to capture the media, we see amazing results from conventional photos such as customer selfie with them holding our product. So pro tip इसमें ये है कि I will run contest awarding a free gift card to my store for the best product selfie submission.
विन 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 विन। तो यहाँ से आप एक ये भी बड़ा एक अच्छा आइडिया है। सो मेक योर एड क्रिएटिव रेलिवेंट। फॉर एग्जाम्पल, I will use an attention grabbing image with a dog using my product for top funnel cold user. So then I will use a product image slideshow or video with text overlay, customer testimonials from a product, so targeting my bottom of funnel warm user. So think mobile first। ये आपने, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप ज्यादातर सर्चेज जो आ रही हैं गूगल ने, पहले भी 2015 से गूगल इस पे लगा हुआ है कि आप जो सर्चेज का ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है वो मोबाइल पे शिफ्ट करेगा। सो मोस्टली जो सर्चेज आती है वो मोबाइल से आती है। So you have to think mobile first. Don't include text so small on the image that user won't be able to read on their phone. So Facebook ad creative case study की तरफ अगर हम आए, so a great case study on ad creative testing is the Trump Facebook campaign from 2016. So उन्होंने किया क्या, उन्होंने हजारों के हिसाब से उन्होंने एड क्रिएटिव टेस्ट की, जिसमें कलर्स, लोगोज, आइकन्स, बटन्स, इमेजेस, फेस, टेक्स्ट और ग्राफिक्स वगैरह यूज किए। नो मैटर योर पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन, दिस इज द केस स्टडी वर्थ रिव्यूइंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्प्लिट टेस्टिंग एंड वेरिएबल। अगर आप देखेंगे इस वीडियो के लिंक को क्लिक करेंगे तो ये आपका वीडियो का लिंक है जहाँ पे ट्रम्प फेसबुक कैंपेन मैनेजर, और यहाँ पे ये भी CBS का एक लिंक है। आपने रिसर्च करना है ट्रम्प कैंपेन मैनेजर, तो यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी, आपको पढ़ के बड़ा अच्छा फील होगा और आपको समझ आएगी कि स्प्लिट टेस्टिंग और वेरिएबल एड टेस्टिंग के क्या फायदे हैं। क्रिएटिव हब की अगर मैं बात करूँ, यू कैन टेस्ट एंड बिल्ड योर ब्रांड्स क्रिएटिव यूजिंग फेसबुक क्रिएटिव हब। आपने क्रिएटिव मॉकअप पे, क्रिएटिव हब पे लॉगिन करके आपने क्रिएटिव मॉकअप पे जाना है। क्रिएटिव मॉकअप के बाद आपने शो इन एड्स मैनेजर। यू कैन यूज द क्रिएटिव हब मॉकअप टूल to see how your ad creatives will look for each type of placement. यहाँ पे फीड्स है, फेसबुक फीड्स है, इंस्टाग्राम फीड है, फेसबुक मार्केटप्लेस, फेसबुक वीडियो फीड्स है एंड राइट कॉलम। So once complete, toggle on the show in ads manager option and use this creative when building your text ad campaign. अगर मैं बात करूँ पिंक बीजी गर्ल की, मोड MBA एक क्लाइंट था। So using the creative hub mockup tool is optional, so I prefer building my ad creative on Canva first, then uploading them directly to the ad level when creating a new ad campaign. Show in ads manager, तो ये Canva से भी क्रिएट हो सकते हैं। मैं मोस्टली Canva यूज करता हूँ, अच्छा टूल है, आपको पहले भी बताया। इसको ट्राई टू यूज एट मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम कैपेसिटी, और इसको जितना सीख सकें इसको सीखें और इसको यूज भी करें। So when creating a new ad campaign on the ad level, you can select your past created mockups. Use Creative Hub Mockups option. आपने न्यू एड पे क्लिक करना है, न्यू एड के बाद आपने यूज क्रिएटिव हब मॉकअप्स पे क्लिक करना है। उसके बाद the other option we use most often is create ad. Then we will upload the ad media we created by the ad media menu. Now pro tip क्या है, best tip, the best ad creative include text। ठीक है, some of my best performing ads include the use of happy and attractive people. So test using people in your ad creative. Make sure your image match the brand naturally reading flow, top of the bottom, left to right. So for this example, I want user to see the female student image first, then the mode MBA, brand logo on the laptop, and then text value proposition. Here is what I do if I had to start over. So I use bright color and attention grabbing text overlay on nearly all of my ad images and videos for clients. Once you click the add media button at the ad level, select either the add image or add video option in the drop down menu. आपने new add media, single image or video or carousel or collection, and then add image. फिर आपने image crop कैसे करना है? Once the select image pop-up screen, you can select a past uploaded image or click the plus upload का जो बटन है
button to add a new image. Depending on the placements you selected at the ad set level for this campaign, you can crop your image as you wish via these crop buttons. So ये सारे buttons के through आप जो second arrow है right hand पे उसके through आप अपने images को crop कर सकते हैं. Okay, we can also edit, change or crop the media via the ad creative section at the ad level. So once you have already made a selection, or you can click the clear all link to start over. सबसे पहले आपने crop image, clear all and then crop image. Again text overlay split testing. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, so test including a CTA text overlay above or below the image of the ad. So this really grabs the user attention when paired with the video. Again text overlay example की अगर मैं बात करूँ, use text overlay on video or images to help sell what you stated in the copy. अगर मैं human nutrition, हम nutrition की बात करूँ तो हम nutrition की ये use text overlay perfectly with bright visuals and black text bar starting with value proposition in it. So we see great result from product image slideshow. Video paired with written reviews appearing at the bottom of the video ad. We will also paste a written review with stars for attention grabbing ad copy. Look at this example, My Pillow. This includes their My Pillow logo for brand awareness, alright, as well as their CTA, buy one get one free. अब हम आते हैं जो मैं आपको पहले डिस्कस कर the ultimate ad hack. The ultimate ad hack is how would you like to spy on your competitor's ad and see exactly what ad copy, image and videos they are using. So talk about saving time and money on testing. Alright. So if you could look at what big brands are doing, they have the huge budgets and they have very paid professional teams for market, have split test and decided on as their final ad. This would be priceless information, right? So well, it's possible with the Facebook ad library. Number one, step for every client. When we get a new marketing client lead at my website, sometime Being Bro and sometime other websites, the first thing we do is a market research. What our competitors are doing online, what keyword phrases and copywriting do they use in their ads and landing page, what type of visuals are being used to convey their value proposition. So ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं. तो मैं यहाँ से अपनी सब्सक्रिप्शन कंपनी, फॉर एग्जांपल I search the wine subscription company में from here. Scroll down to view all the active ads. ये नीचे सारे आपको नजर आ जाएंगे जो यहाँ से आप. So I like to scroll all the way to the bottom to see the ads that have been running the longest, as these are typically not split test. So I want to see the tried and true long-term ads, as these are culmination of the best variables. To learn more about the ad, click See Ad Details everywhere. On this page, we can review ad variation and analyze, document and pull inspiration from the ad copy and image. Click the CTA button and review the landing page. This is key, as the landing page is just as important as the ad itself. So bigger brands split test landing pages to minimize holes in their sales funnel, and they know where the customers can exit from. Save Facebook ads. Save post. What are big brands are doing? Oftentimes, students think they have to originally
and create their own unique ad copy and creative. While I agree to certain extent, you also want to use every resource available to you, including researching your competitors and big brands. And they have teams in place for marketing and 6 to 7 figure ad budget. So why not reverse engineer what they are doing for their own brand? So Google your competitors and big brands in your niche. First thing. Second is use the Facebook ad library to review various brands Facebook Instagram ad. Use the Chrome extension Facebook Pixel Helper to review competitor page for Facebook events that are tracking. बेस्ट फेसबुक अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो आप फेसबुक इंस्पिरेशन पे जाएं, वहां से आपको बेस्ट फेसबुक एड्स की कॉपीज मिल जाएंगी और वहां से आप उसका एक आइडिया भी ले सकते हैं। यहाँ पे प्रो टिप क्या है, गेट फेसबुक यूजर to not only stop scrolling in their feed because of your perfect ad elements, but also because of your ad high clout on Facebook. Clout means social engagement. So by clout I mean social engagement with your post, like हैं, comments हैं, yes, shares हैं, जो भी. अब once you have a split test all your ad level variables and found that best performing ad copy and ad creative, create that ad as a post on your Facebook page. So then boost that post to build up the engagement, cloud engagement and then post engagement. Again, since we are only looking for social cloud and don't plan to target this post engagement, and we don't have any plan to retarget this post engagement via custom audience, so before we use this post for our conversion objective ad, we can get this cloud for pennies by targeting location on our cheap countries list. So आपने न्यू कैंपेन में जाना है, फिर एंगेजमेंट एंड देन पोस्ट एंगेजमेंट में आप अच्छा क्लाउड आपको मिल जाएगा. Then you can use this high cloud post in all relevant ad campaigns in the future. Conversion objectives campaign targeting your actual customer via custom audience. So plus use existing post under ad setup at the ad level. So then select your post, or user will stop scrolling down their newsfeed the second they see this perfect ad and high social cloud. So thank you so much. ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरह से परफेक्ट फेसबुक कॉपी और क्रिएटिव किस तरह से क्रिएट करते हैं. ये कोई गाइड थी आपके हवाले से और आपके लिए. सो इसमें हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं कॉपी से रिलेटेड, कॉपी के प्रिंसिपल से रिलेटेड, कॉपी के टाइप से रिलेटेड, और फिर कॉपीज को क्रिएट कैसे करते हैं, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, उसके लिए टूल क्या यूज़ करते हैं. सो इन तमाम चीज़ों के बारे में आप मेरे साथ साथ लेक्चर में प्रैक्टिस करते जाएं, बार बार इसको सुनें, अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे और मेरे ईमेल पे मेरे साथ शेयर करें. आई विल बी मोर हैप्पी कि आप लोग एटलीस्ट ग्रो कर रहे हैं और हमेशा कम्युनिटी में अपना पार्ट दें. जहाँ पे भी आपके क्लास फेलोज इकट्ठे हैं वहाँ पे अपनी पार्टिसिपेशन दें और पॉजिटिव पार्टिसिपेशन के थ्रू अपनी लर्निंग को इनहांस करें. सो थैंक यू सो मच. अब फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में.